आज के इस लेक्चर के माध्यम से हाउ टू डू हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस फॉर ब्रिजेस टू बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर स्ट्रीम्स। तो इसके लिए जो आईआरसी कोड है दैट इज आईआरसी 78 2024, आईआरसी एसपी 13 फॉर स्मॉल ब्रिजेस 2022, और भी कोड इसमें जगह जगह पे दिए गए क्लास रेफरेंस के लिए। उन कोडों को भी यूज करना है। जब भी हम लोग कोई भी एक स्ट्रीम बनाते हैं तो उसके काफी व्हाट विल बी द पीक डिस्चार्ज, मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज एट दिस लोकेशन, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्कवरिंग कितनी होगी, स्पैन रिजिंग विड्थ कितनी होगी, कितना रखना है, ये सब की स्टडी करके ही एक अच्छा और स्टेबल ब्रिज बनाया जा सकता है। तो फॉर इंजीनियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्पैन विड्थ कितना हो जाए, लीनियर वाटरवे क्या है, ये सब के बारे में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हमें कोई ब्रिज बनाना होता है तो इस ब्रिज लोकेशन को मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज कितना होगा, यदि यहाँ ब्रिज बनाना दिस विल बी द कैचमेंट एरिया। पीछे वीडियो हम लोग देखा व्हाट इज कैचमेंट एरिया, जो उस लोकेशन पे जितना डिस्चार्ज करेगा, जितना एरिया से पानी यहाँ पर आएगा ट्रिब्यूटरीज मेन कोर्स, वो उसको हम लोग उस एरिया का कैचमेंट कहते हैं। तो पर्टिकुलर ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया होती है, जिसको हम लोग गूगल अर्थ से या इसरो का भुवन है या जो सर्वे ऑफ इंडिया के टोपो शीट्स हैं या स्मॉल कैचमेंट है, तो हम लोग ट्रेवर्सिंग करके उसका कैचमेंट एरिया पता कर लेते हैं। once we know the catchment area, we next is to determine the bed level। यदि एरिया वेलोसिटी मेथड से करें तो ये बेड का लेवल क्या है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इस बेड की कितनी है, उसको डिटरमाइन करना होता है। और फिर जो उसमें वाटर फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है। तो जनरली वेलोसिटी बेड के स्लोप के ऊपर में निर्भर करती है, जिसको माइनिंग फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। अदरवाइज नाउडेज वी कैन एस्टिमेट इट विद द करंट मीटर्स आल्सो एट डिफरेंट लेवल्स, एंड उसका हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी को एवरेजिंग करके स्टैटिस्टिकल बना करके यूज कर सकें। उसके लिए भी अच्छे इक्विपमेंट मार्केट में डिजिटल और नॉन डिजिटल अवेलेबल हैं। और जब हम लोगों को इसका जो एलिवेशन में बेड लेवल्स निकालने होते हैं, दैट कैन बी with the help of total station, total station, or with the help of satellite, or with the help of bios, डेटा बायो जितना से हम लोग इसके लेवल्स को डिटरमाइन कर लेते हैं कि यदि ये बेड का सेंट्रल लेवल है, किसी भी स्ट्रीम का सेंट्रल लेवल, तो लेफ्ट में और राइट में ये एलिवेशंस कितने हैं एट फ्रॉम दिस डिस्टेंस, और रिकॉर्ड करके ऑर्डिनेट्स बना करके वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट स्ट्रीम की जो एरिया इम्पोज होगी, जो जहाँ पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के समय जो मैक्सिमम हाई फ्लड लेवल होगा और उसमें कितना फ्लो जा रहा होगा दैट लोकेशन भी एस्टिमेटेड। सो ऐसे ही कोई एक स्ट्रीम है जिसके ऊपर में IRC SP 13 के हिसाब से एट दिस लोकेशन, फिर यदि कैचमेंट एरिया लार्जर है तो 500 मीटर, और डाउन स्ट्रीम में लगभग 500 मीटर टू 300 मीटर का हम लोग लेवल, स्ट्रीम का पूरा लेवल रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहाँ का एचफॉल डिटरमाइन करने के बाद एचफॉल से कितना कितना बेड है, at what distance, how much the level of the bed, that everything is recorded, and once we record it, we find out the ordinates। ये ऑर्डिनेट्स कितने के हैं, इनका एवरेज ऑर्डिनेट कितना है, इनके बीच की दूरी क्या है, इससे हम लोगों को एक एक ऑर्डिनेट का एरिया डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द एरिया, एंड देन वी डिवाइड ए नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, फिर सबको जोड़ करके समेशन करके टोटल एरिया पता लग जाती है, और माइनिंग का फार्मूला से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो डिस्चार्ज जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर -13.173 मीन्स लेफ्ट साइड में -13.173 पे जो बेड लेवल है दैट इज 37.039, -9.689, -9.689 पे दिस इज 31.147। Likewise, we did survey and we mapped up to 15 points, means from the 35.577 distance from the bank to the right hand side, it is again the HFL. We reach the HFL 37.039. So likewise, we do the survey, hydrological survey, and find out all the details for the C cross section at the 0, 0 where we intend to build the bridge,
and at upstream, say about 500 meter upstream में same data minus 26.05 means at the extreme asphalt where the asphalt at the extreme distance where asphalt is 37.257 minus 17 34.923 bed का level है. Likewise we recorded for all the 15 point at the upstream. Then we recorded at the downstream also about 255 meters from the location where we intend to build the bridge. And this data is also recorded minus 22.592 36.911 और 255 पे उसका जो फ्लड का टॉप लेवल है 16.025 पे 35.909 लेवल पे 32.4991. Likewise we recorded all this depth from the H कितना है. We did the survey, recorded left bank in the right and left side from the center. So left right करने से it will be easier to find out कि हम किस साइड में मूव कर रहे हैं regarding the data. So accuracy इसमें ज़्यादा रहेगी. When we can take from 0 to all this, but it is always better to have this from center, left and right. So once we recorded data for the 0 chain, where we intended to be, for all the three we need to calculate what is the hydraulic mean depth, what is the velocity with the mining distance, and then what is the discharge. So all the three locations, and then we level. So we recorded for the first location minus 13.173 distance. The level was 37.039 minus 6 point minus 6 minus 9.689 31.147 minus 8.583 30.653. Now our next aim is to calculate level difference with HPL. HPL से उसका level difference कितना है at distance minus 13 पे कितना है, minus 9 पे कितना है, minus 8.583 पे कितना difference है. इस distance पे from the center of the river वो कितना depth है. So we can see minus 13.173 पे HPL itself is है, वहाँ depth 0 होगा. But जैसे ही हम लोग minus 9.859 minus from center minus 9.8689 पे जाते हैं तो 31.147 हो जाता है. मीन्स 37.039 minus 31.147 will be the depth at the location at point number 2. This we can calculate also. Just see with the calculation. Like level at point 1 at the extreme edge where the asphalt is there 37.039 37.039. At second point it is 31.147. So the difference has come 5.892. Likewise from asphalt point number 3 is 30.653. So we can calculate this also 37.039 minus 30.653. 30.653. So it has come 6.386. So level difference with H12 we calculate for all the points. Once we calculate this level difference, now what is the distance between point number 1 and 2? Is we get the difference between two. This will help us in determining the area of that segment. So we can know what is segment 13.173 minus 9.689 13.173 minus 9.689 will be the width of that segment. So it has come 3.484. Likewise, what is distance this to this? उस बीच की दूरी कितना है, और जहाँ सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया लेवल उनके बीच की दूरी कितना है. तो दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड.
9.689 minus 8.583. It has come 1.106. Likewise, we calculate for all the points. Point number 3, point number 4. So we get the what is difference between these two ordinates. Means we can see here number of ordinates are there. So what is different? This we recorded by this distance from the center minus this distance. We get this one t. And now we know the depth of this segment up to here. We know this, so we can do the average. What will be the average depth? Average this plus this divided by 2. If we do, then we get this average depth. So now we calculated segment distance between the segments क्या है, इसके इसके बीच में क्या है, इसके इसके बीच क्या है. Then we want to know what is average depth between the segments. Then what we do, we add this and this divided by 2. So 5.892 5.892 plus 0.00 divided by 2. So this is average 2.946. The average water depth below HFL is 2.946. Likewise, we can know this ordinate plus this ordinate divided by 2. We will get average water depth at this location. At means between this, what will be? So 5.892 5.892 plus 6.386 equal to divided by 2. So 6.139. So for the average depth between these two ordinate is 2.946. Between this 6.139. Between this 6.7444. Between this 7.308. Likewise, we calculate average water depth below HFL for all the segments. Once we know this, multiply this by this, we get the area of one ordinate. Likewise, we get the area for all the ordinates. Area for 3.484 into 2.946 2.946 10.26. We got the area for one ordinate. Likewise, we get the multiply the distance between the segment and the average water depth. We get the area for all the segments. Once we get area of the all segment, we sum up and we get the total area of the cross section. Total area of the cross section. What we have done survey from the HFL, we get the total area of this cross section. And after sum up all the ordinates multiplied by the average water depth, we get the area 279.46. Once we know the area 279.46, we also want to get what is weighted perimeter. Means जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका weighted perimeter कितना है. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए what we do, we calculate this plus this plus this plus this. This can be calculated with the Pythagoras this thing. We know the depth, we calculated depth, we know the distance between the ordinates. Then a b root of a square plus b square will be the this length. Likewise, for all the segment, we calculate the length. Whatever length comes, it is a weighted perimeter for that segment. Once that segment, we sum up all the weighted perimeter and find out the total weighted perimeter. How much will be the total weighted perimeter of this cross section? So we know now 6.84 for that segment
1.21, 2.20, 2.19, 2.09. So by समी पूरे जोड़ने से summation of all this, it has come 55.1. Now we know that hydraulic mean depth of this channel will be A by P. Now A is 279.46 and weighted perimeter is 55.1. So 279 279.46 divided by 55.1. So 5.0 जो इसका hydraulic mean depth है, it is 5.07 meter. Once we know the hydraulic mean depth, with the help of mining formula, we can find out what will be the velocity. So velocity is nothing but 1/9 in in bracket hydraulic perimeter to the power 2/3 into जो उसका वेट का स्लोप होगा to the power 1/2. So 1/9 r to the power 2/3. This is hydraulic mean depth and this is wet slope by 1/2. So for this wet mining constant 0.055. It is given in the table in the code. Then R we have just now calculated 5.07 to the power 2/3 and the bed slope. All the three sections when longitudinally we determine elevation divided by the length. It has come 0.0005. So we can put this value also 0.005 to the power 1/2. Solving this, we get the velocity 1.206 meter per second. Now we know the velocity in meter per second. We also know the area of the cross-sectional area of the stream. We can know the peak discharge at this section. So at this section peak discharge will be area 279.46 into 1.206. So we can multiply 279.46 into 1.206. So it has come 337.02 cubic meter per second. Now we know what is the maximum peak discharge at location 0, 0 where we want to build the bridge. Likewise, we have calculated how much the discharge at the 500 upstream and 255 meter downstream. So at downstream it has come 219.36 cubic meter per second. At upstream it has come 320.48 cubic meter per second, and at 337.02 cubic meter per second. After this, if we average A plus B plus C, means this plus this plus this divided by 3, we get the average discharge, average Q in cubic meter per second 292.32 cubic meter per second. This discharge we will be using for further calculation of how to determine the Scour depth. In IRC Scour depth. Now regime width, another regime width is that width जहाँ पे ना स्कवरिंग होगा ना सिल्टिंग होगा, दैट इज एक आइडियल होता है. इसके लिए जो फार्मूला दिया गया है 4.8 root of Q. Now 4.8 and our root of Q is 292.32. Solving this, we get the 82.06 meter, the width required for the regime width required for the flow of that discharge. So regime width हमारी आ गई 82.06. Now instead, certain times this calculation become very uneconomical depending on site condition. Because 82.06 means we have to build a very long bridge. So इसको cost को reduce करने के लिए we reduce the section. तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे अभी विड्थ कितनी चल रही है. जैसे किसी में हमने पाया कि एवरेज 49 चल रही है, एज सेफली वी कैन रिड्यूस इट by 33% that regime width.
So if we reduce by 33%, 54.98 meter has come, but it is undesirable always. जैसे हम उसको विड्थ को वो करेंगे, स्कवरिंग हमारी बढ़ जाती है, वेलोसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगा, डैमेजेस बढ़ जाते हैं, तो अपरन वगैरह देने की तो उसको देखना है कि हम वेदर रिड्यूस करने से दूसरे पैरामीटर तो बहुत ज़्यादा खराब और डिसएडवांटेज साइड में तो नहीं जा रहे हैं, इसको हमको आगे चेक करना है. तो स्पैन अरेंजमेंट वी हैव कंसीडर्ड because 54.98, so 2 into 30, 2 spans of 30 meter will be good enough. उसके बीच में expansion gap के लिए 0.04 meter add किया, तो length with expansion joint considered for this design is 60.04 meter. Now we will check for the viability, इसका स्कोरिंग कितना होगा, इसके लिए आगे हम लोग चेक करेंगे. तो IRC 78 में जो दिया गया है, ये कैचमेंट एरिया 0 से 3000 स्क्वायर किलोमीटर की हो, तो जो भी डिस्चार्ज हम लोगों का आ रहा है उसको वी हैव टू इंक्रीज बाई 30%. तो हमारा डिस्चार्ज आ रहा है 92.32, तो उसको इंक्रीज कर दिया बाई 30%. सो इट हैज कम 380.016 cubic meter per second. Now this we will be using for the calculation of स्कोर डेप्थ. स्कोर डेप्थ के लिए 30% इंक्रीज कर देना है पर IRC 78. लीनियर लेंथ क्या होती है, तो लेंथ जिसमें फ्लो चल रही है और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री हो. दो स्पैन है तो एक पियर आ रहा है, दैट इज कंसीडर्ड विड्थ इज 1.2 मीटर, और जो इसके अबटमेंट है उसका भी कंसीडर्ड थिकनेस ऑफ द अबटमेंट इज, और वी कैन से विड्थ इज 1.2 मीटर. तो इसका जो लीनियर वाटरवे होगा 30.02 बिकॉज 60.04 है, minus 1.2 by 2, half width of the abutment, and half width of, we get the clear waterway at this side, and likewise clear waterway this side. So 28.82, 57.64 is clear waterway where flow can take place. So now we know the design discharge for the Scour condition 30% increase. We know the width available, so 6.59 meter per second width हो गया per meter of the bridge. So this is denoted by dB. Now once we know dB, so DSM is a Scour depth. It is given by 1.34 dB square upon KSF to the power 1/3. So, and where KSF is a silt factor, which is 1.76 root of D50. So silt factor को हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, how to determine silt factor डिपेंडिंग, जो भी हमारा सैंड सिल्ट है तो उसका हम लोग सी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर परसेंटेज फाइनर और सी साइज में कर लेते हैं. जहाँ पे 50% पासिंग होता है वहाँ से ग्राफ ले करके D50 निकाल लेते हैं, देन उसका रूट करके 1.76 कर देते हैं, we get the KSF. So this in detail we can study in separate. So यहाँ पे इस कैलकुलेशन के लिए KSF we considered 1. So 1.34 dB has come 6.59 का whole square, KSF is 1 to the power 1/3. So it has come, Scour depth has come 6.94 meter. Now this Scour depth for the abutments, it is one, हमको जो कंसीडर करना है 1.27 times of the normal square depth. Normal square depth मेरी आई 6.94 multiply by 1.27, we got the 8.8138 from the एक्सपल, जो स्कवरिंग का मैक्सिमम डेप्थ होगा एट द अबटमेंट होगा, तो उसका लेवल क्योंकि एक्सपल 37.039 है, 8.8138 से माइनस कर दिया 28.225 मीटर आ गया. एंड स्क्वायर डेप्थ एट पियर लोकेशन इज 2 टाइम स्क्वायर डेप्थ, जो नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ है, तो 2 into 6.94 13.88. तो हमारा इस पर 37.039 है, 13.88 फ्रॉम द स्क्वायरिंग हुआ, तो यहाँ 23.159 आना चाहिए. तो 23.159 मच जो प्रेजेंट उसका हमारा बेड का चैनल का लेवल उससे मच लोअर है, तो हमको जो फाउंडेशन प्रेस करना है इसके नीचे प्रेस करना है, एंड देन उसके लिए अपरन वगैरह बनाना है, तो इसमें भी अनइकोनॉमिकल. तो वी कैन जो हमारा ब्रिज का स्पैन है वी कैन इंक्रीज दैट एंड चेक whether स्कोरिंग उसमें विदिन द रेंज आ रही है या नहीं आ रही. आफ्टर डूइंग 2 or 3 रिपीटेशन वी come to the optimum calculation.
So thanking you. With this, we have concluded how to calculate hydraulic calculation after bridge. Thanking you.